So hello everyone, let us start the topic of the day. Today we'll understand about drawings, owner's equity and relation of accounting equation, that how it actually arises. Okay, why we are studying this accounting equation. Okay, now the very first concept today is drawings. Now what is the meaning of drawing? We all know that there is an owner and there is a business, and owner contributes capital into the business. Okay, that is, owner invests money into the business. This is the owner A, suppose, and he has a business of electronic products. His business name is, say, electric expertise. Okay, electric expertise. Okay, now he invested some amount into this business. Obviously, to grow the business he need to invest the money. Okay, so whatever investment is made by A into the business is known as the capital of this A. Okay, now the most important thing comes under the concept of business entity concept. I'm talking of business entity concept. According to this concept, if owner has contributed some capital into the business, owner and business are two separate entities. Okay, it means if the owner is contributing capital into the business, okay, some money into the business, it is known as capital. But the same time, after say a period of 6 months, if he withdraws some amount of cash from the business, it is known as drawings. That is, he is withdrawing the cash for his personal use, then it is known as drawings. Okay, because I am talking of business entity concept over here, because the owner is considered separate from the business. That means if he is contributing capital into the business, and suppose after the period of 6 months, if he thinks that he needs some money for his own personal use, okay, and he draws some cash out of that business, it is known as drawings. Okay, now this important term is personal use over here. Personal use means, suppose you want to go for a movie with his friends, that is a personal transaction. This is not a business transaction. Okay, suppose he wants to pay the college fees of his kids. Okay, suppose he need to pay for house rent. Okay, so these are all personal transactions of the owner. Okay, when we talk of business transactions, they are paying salaries to the employees. Whatever happens in this business enterprise, in this building or factory, that is only the business transaction or business expense. Okay, that means suppose we are paying rent to the employees, we are paying salaries to them, sorry, paying rent to the of the building, paying salaries to the employees, or we are actually, say we are buying the products from a from a creditor. Okay, or we are selling the goods to the customers. So these are the business transactions. Okay, so that is why we say owner are always kept separate from the business. Both are two different separate entities. Okay, now let us understand the meaning of this. Now today we'll understand about owner's equity. But the most important thing is that you should know the meaning of capital. Okay, because there are many sources and many factors which affect the capital of the business. Okay, now suppose capital contributed by this owner A is 6 lakhs in this business. Okay, in this business 6 lakhs. Now the he may, suppose after a period of 6 months he can make the drawings of rupees cash worth rupees 30,000 and goods worth rupees 70,000. Suppose he withdraws some amount of cash or kind. Kind means other than cash, like assets other than cash. Kind means assets other than cash. That was the goods, or it may be machinery or furniture, whatever he feels like. Okay, for his own personal use. Okay, so that is called drawings. Now suppose he took the amount of this 1 lakh. Okay, so total drawings in this total up to date is 1 lakh. Okay, now it will reduce the capital of the business or the owner's equity. Now this is very important. Just now I told you that owner's equity, right now you understand it is capital. Okay, capital is equal to owner's equity. That's it. Okay, now we'll understand the owner's equity in detail after some period of time. Now if you understand over here, total capital now is 5 lakh. That means 6 lakhs was the total capital and drawings were made by the owner 1 lakh. So total capital remaining in this business is now 5 lakhs only. Okay, now the capital remaining is only 5 lakhs because 1 lakh he used for his own personal expenses. Okay, so this is the concept of drawings. Okay, now so now if you can see over here, you can see the term here, balance sheet. Now balance sheet is a financial statement which shows you the assets on one side and liabilities on the other side. And if you see over here liabilities, it is divided into two sections. First is the capital part, that is owner's equity part, and second is the basically the other liabilities of the business. Okay, now right now the concept of, the concept of drawings. Okay, so whatever the capital is contributed by the owner into the business, that is your, that is say 85,000. Okay, now you're subtracting the drawings from that part
and the remaining capital into the business is 75,000 left with the business. Okay, now since हम हर चीज business के point of view से कर रहे हैं, हम business को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ओवर दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, बिजनेस की बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिजनेस के ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। ओनर का कुछ भी पर्सनल ट्रांजेक्शन होगा वो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट इज हमने 10,000 माइनस कर दिया बिकॉज ये सब ओनर को पर्सनल यूज के लिए हो गया है। सो हमने 75,000 सिर्फ बैलेंस शीट में शो किया बिकॉज ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉइंग्स इन अकाउंटिंग। Now let us understand the meaning of owner's equity over here. Now owner's equity का मतलब क्या होता है? Now we understand in a very simple way. This is a very technical definitions, okay? But हम simple समझेंगे इस बात को. Suppose मेरे पास एक घर है जो 5 लाख का है, ठीक है? This is what I own with me. That is assets. Now if हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसमें तो मतलब क्या हो गया कि बिजनेस के पास जो भी एसेट्स अवेलेबल हैं, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जो भी लायबिलिटीज बिजनेस की हैं, ठीक है, उसको माइनस कर दो। दैट मीन्स वॉट एवर यू ओन, ओके, suppose whatever you own, that is you own suppose 5 lakh rupees. This is simple layman's language. आपके पास 5 लाख रुपए का घर है, ठीक है, बट आपको किसी को 3 लाख रुपए देने हैं लोन के, तो आपके पास कितने बचेंगे? हाउ मच इज रिमेनिंग विद यू? दैट इज 2 लाख. सो दिस इज योर own equity. This is own worth. Okay, this is your own worth. Okay, which you're talking of now. अब सपोज आपकी जब एसेट्स बढ़ेंगे तो आपकी इक्विटी बढ़ेगी, राइट? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, ये लेमन्स लैंग्वेज की टर्म में हम बात करें कि अगर मेरे पास 6 लाख का घर है और मुझे किसी को 3 लाख रुपए देने हैं तो 3 लाख रिमेनिंग ही मेरी नेटवर्थ होगी, ठीक है? सिमिलरली बिजनेस का भी यही रूल होता है, जितने उसके पास एसेट्स हैं, जितना व्हाट ही ओन्स, व्हाट द बिजनेस ओन्स माइनस व्हाट द बिजनेस ओ टू थर्ड पार्टीज, ओके, आप उसको माइनस कर देंगे, उसमें से क्या बचेगा आपके पास? नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस और ओनर्स इक्विटी. दे आर द सेम थ्री टर्म्स. ओके, नाउ let us understand again. Suppose I have assets of worth 60,000 in my business, okay, and I have liabilities of 20,000. That is the amount borrowed from bank. 20,000. You subtract this amount, and remaining is your net worth or net assets or owner's equity or shareholders' equity. All is same. Owner's equity essentially the owner's right to the assets of the business. Obviously, because अगर आपके पास जितने assets है उसमें से आपने माइनस कर दिया जो liabilities आपको किसी थर्ड पर्सन को देना है, तो जो भी आपके पास assets बचे उस पर आपका पूरा राइट है. तो दिस इज योर ओनर्स इक्विटी. दिस इज एक्चुअली योर नेटवर्थ एंड नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस. ओके, नो ओनर्स इक्विटी क्या होता है? ओनर्स राइट टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि हमें सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में क्या क्या रिमेनिंग है और बिजनेस के पास क्या है, ठीक है? जब मैंने वर्ड बोला ओनर्स इक्विटी तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम ओनर क्यों कह रहे हैं जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं वो सेपरेट है, राइट? बिकॉज ओनर के लिए जो भी अवेलेबल बचा है बिजनेस के पास वो हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी, ठीक है? बिजनेस के पास ओनर के लिए जो कुछ भी बचा है उसको हम ओनर्स इक्विटी में डाल देते हैं, ठीक है? दैट मीन्स हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं कि बिजनेस के पास क्या है और बिजनेस के पास क्या नहीं है, राइट? सो वट एवर इज लेफ्ट ओवर फॉर द ओनर आफ्टर यू सब्ट्रैक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज फ्रॉम द एसेट्स, दैट इज कॉल्ड द ओनर्स इक्विटी और द नेटवर्थ और नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस. सब कुछ हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन सेपरेट होने चाहिए ओनर के ट्रांजेक्शन से. जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी कंफ्यूजन होता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को लेकर के, that should be separate from the owner transactions. Okay, now accounting equation क्या होती है? Accounting equation क्या होती है? We have discussed, that is assets is equal to liabilities plus capital. अब आप ये सोचेंगे कि why this kind of equation we are having? Because अगर हमने पहले डिस्कस किया था कि हम बिजनेस शुरू करते हैं, हम सबसे पहले उसमें क्या इनपुट डालते हैं? उसमें एसेट्स रखते हैं हम. दैट मीन्स एसेट्स हमारी मेन प्रायोरिटी होती है. जो कुछ भी हमारे पास है बिजनेस में सबसे पहले हमारे एसेट्स ही हैं. दैट मीन्स आपके पास कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, इन्वेंट्री है, ये सब कुछ आपका है जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. तो इससे धीरे धीरे आपका जब बिजनेस ग्रो होता है तो लायबिलिटीज बढ़ने शुरू हो जाती हैं. फिर उसके बाद आपकी कैपिटल इफेक्ट होती है. जो कैपिटल वही है जो आपके एसेट्स हैं, ठीक है, बट इसके अंदर क्या क्या जुड़ा है? जैसे इसमें प्रॉफिट्स जुड़ गए, इसमें रिटेन अर्निंग्स आ गई, इसमें रिजर्व्स आ गए, इसमें आपके एक्सपेंसेस आ गए, रेवेन्यूज आ गए. तो ये सब आपकी कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, राइट? सो इसलिए इक्वेशन ऐसी बनी कि जो कुछ भी आपके पास है इज इक्वल टू जो कुछ भी आप थर्ड पार्टी को वो करते हो. अब क्योंकि हमने डिस्कस किया था अभी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने आपको सिंगल एक क्रक्स बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का कि जो कुछ भी ओनर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल को बिजनेस में वो बिजनेस की हो जाती है, वो ओनर की नहीं रहती है. दैट मीन्स अगर ओनर बिजनेस को कुछ कैपिटल दे रहा है तो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है ओनर की तरफ, राइट? इसलिए इसको हम liabilities plus owners equity लिखते हैं because business now liable to the owner for its capital. Okay, because अब business owner के लिए
लाइबल हो गया है. बिजनेस हैज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर आल्सो एंड बिजनेस हैज लाइबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज आल्सो. ओके, इसलिए दोनों लाइबिलिटीज को हम सेपरेट रखते हैं. लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द ओनर एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द थर्ड पार्टीज. ओके, इसलिए डेफिनेशन ऐसी बनाई गई है. सो एसेट्स हमारे वो हो गए इन्वेंट्रीज, इक्विपमेंट, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग. ये सब हमारा जो हमने रिसोर्सेज यूज किए हैं बिजनेस में इज इक्वल टू लायबिलिटी जो हम थर्ड पार्टीज के थ्रू अब हम इन्वॉल्व हो गए बिजनेस में. तुम्हारी लायबिलिटीज ऑब्वियसली बनेंगी बनेंगी. टैक्सेस हो गए, बिल्स हो गए, आपने परचेजेस करी, आपने सेल्स करी, कुछ आपने लोन्स लिए, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, राइट. और ओनर्स इक्विटी, अब आपने ओनर से जो कुछ भी लिया है कैपिटल के फॉर्म में या आपके प्रॉफिट्स जुड़े हैं, उन सब के लिए आप लाइबल हो गए ओनर को देने के लिए, बिकॉज जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसको भी आप कंट्रीब्यूशन देंगे ओनर को. अब सीन से हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो इसलिए इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर. दैट इज वॉट एवर इज लेफ्ट फॉर द ओनर. ओके, नाउ आई थिंक दिस इक्वेशन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ओनर्स इक्विटी इन अ कंपनी. ओके, ओनर्स इक्विटी क्या होता है, कुछ फैक्टर्स इसको इंक्रीज करते हैं और कुछ फैक्टर्स इसको डिक्रीज करते हैं, राइट. नाउ कैपिटल इज व्हाट, अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस. इसको क्या फैक्टर डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ओनर की विड्रॉवल्स. ओके, दैट मींस ड्रॉइंग्स बाय द ओनर. दैट मींस अगर कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करेगा बिजनेस में से, इट विल रिड्यूस द ओनर्स इक्विटी. दैट मींस इट विल रिड्यूस द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, it will reduce the net worth of the business, it will reduce the owner's equity of the business, right. अब सपोज accumulated earnings और profits है बिजनेस के पास, so obviously it will increase the owner's equity. okay, and कोई earnings generate हुई है बिजनेस में, obviously it will add to the owner's equity. okay, suppose कोई dividends आपने shareholders को पे किए हैं, वो reduce करेगा owners equity को, because this is paid to third party now. अभी डिस्कस राइट नाउ कि ओनर्स जो हैं वो थर्ड पार्टी है बिजनेस के लिए, राइट. सो जो भी शेयर होल्डर्स होंगे बिजनेस के, ओके, उनको अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही, दैट मींस वो उनका पर्सनल हो गया, वो डिविडेंड्स उनके पर्सनल यूज के लिए हो गए, वो डिविडेंड्स के पर्सनल ट्रांजैक्शंस में आ गया उनके, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओनर्स इक्विटी में से, बिकॉज ये आपकी बिजनेस के नेट एसेट्स को कम कर रहा है. ठीक है, now let us understand the accounting question in detail. Assets is equal to liabilities plus equity. Now equity is equal to what? Now see, assets is equal to liabilities plus contributed capital, okay, plus retained earnings, because since it is adding to your net assets or net worth, it is added in the equity section. Okay, now suppose again any dividends are paid, they are subtracted. If any revenues, whatever the company has earned over the period of years or over every year the company is earning some amount of earnings, obviously it is added into the equity section, and whatever the expenses are there, they are being subtracted. So that means कुछ चीजें ओनर की इक्विटी को घटाएंगी और कुछ चीजें ओनर की इक्विटी को बढ़ाएंगी. So you have to understand कौन सी चीजें उसको घटाती है और कौन सी चीजें बढ़ाती है, राइट. अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपको यही करना है जब हम डिस्कस करेंगे उसको, तो आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्या चीज उसको इंक्रीज करती है और क्या डिक्रीज करती है. सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है कि क्या चीजें बिजनेस की इक्विटी को बढ़ाती हैं और क्या चीजें बिजनेस की इक्विटी को डिक्रीज करती हैं. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज रिटेन अर्निंग एग्जांपल. ये फैक्टर्स हैं जो ओनर्स इक्विटी को अफेक्ट करते हैं. जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए आपने 1 लाख, ड्रॉइंग्स 3000 थी, नेट इनकम थी पूरे साल की 40,000, रिटेन अर्निंग्स थी 50,000, एक्सपेंसेस 15,000. सो नेटवर्थ और नेट एसेट्स और ओनर्स इक्विटी क्या है, क्या है, दैट इज 1 लाख आपकी कैपिटल है, ऑब्वियसली इट ऐड टू ओनर्स इक्विटी, सो वी एडेड दिस. ड्रॉइंग्स विल रिड्यूस द ओनर्स इक्विटी, सो माइनस इट. नेट इनकम विल इंक्रीज ओनर्स इक्विटी, बिकॉज ये बिजनेस की प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगा, बिजनेस की इनकम में जाएगा, तो 40,000 एडेड. रिटेन अर्निंग्स आल्सो एडेड टू ओनर्स इक्विटी, बिकॉज ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे, सो 15,000 एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड. आई एम सॉरी, 15,000 आई जस्ट फॉरगॉट टू subtract over here, so minus 15,000 you can write over here, not 40, minus 15,000. So that means these are this expenses and drawings are reducing the owner's equity and rest all are increasing the owner's equity. So this is what is net worth. Okay, so retained earnings again the same thing, profits accumulated over a period of years since the inception of the business. जब से बिजनेस शुरू हुआ है, जो जो प्रॉफिट्स कंपनी ने accumulate किए हैं उसको हम कहते हैं retained earnings. It is represented in the equity section of the balance sheet. We have discussed this, that retained earnings are added to the owner's equity. Okay, then the profits which are retained in the business, so that can be reinvested back into the business for future growth. We have discussed in the previous video about it. Okay, now if you see over here balance sheet, you will find assets in one side and liabilities and net worth on other side.
That means whatever the liabilities business has towards the owner as well as towards the third parties are recorded over here. Now if you can see over here, these are the liabilities which are the business are having or business is having towards the third parties, and this is a liability of the business towards the owner, because owner is a third party. So owner's equity is, that means whatever is left for the owner in the business. Okay. Now, if you see over here, this capital is, suppose example, we can say over here, capital is 80,000, additional investment by the owner. It is added, obviously it is added to the owner's equity because it will increase the capital of the business. So it is added in the owner's equity. Okay. Now, withdrawals, any withdrawals are subtracted. We subtracted this. So we'll get the net worth of the company. Okay. Another example, suppose this is the opening balance of owner's equity, because every year you are maintaining this equity. Okay. And every year's opening balance you take, that is the last year balance you add to the new year balance. Okay. So opening balance is say 4,000, and income earned, obviously it is added to the owner's equity because it is increasing the capital of the company, and minus the losses, obviously owner contribution is additional contribution made by the owners into the business. Okay. During the period of year, any drawings made by the owner are subtracted from the business. So this subtotal is 200. Okay, 200 million. So ending balance of owner's equity is 5,080. This becomes the closing balance of this year. So opening balance will be the next year balance. Okay, so this is the example of owner's equity, that what factors are increasing it and what factors are decreasing it. The main crux is this only.